the mortise and wipe away excess glue with a damp cloth. Once done, clamp the back leg to the T-bar clamp to strengthen the joints while the glue dries up. Ensure they are properly aligned with the tri-square. Till then, drill some holes on the joints and insert dowel pins into them with some glue on it. Cut the extra dowel pins with a chisel. Once you have fitted these together, you will find that the back side of your chair is ready. Now start assembling the sides and the front of the chair. Apply adhesive to all the frame pieces and the bottom rails and fix them onto the back piece. Fix the front leg with the frame and place it on the back leg. Tap them lightly with a mallet to set in and wipe away excess glue with a damp cloth. Once done, fix it to the T-bar clamp to strengthen while the glue dries up. Again, drill some holes on the joints and insert dowel pins into them to strengthen it further. Cut the extra dowel pin with a chisel. Once you have fitted these together, you will find that the frame of your chair is ready. When done, smoothen all the edges with a smoothing plane. Now measure and cut strips of equal width for the seat slats. Keep an inch longer than the size of the frame on both sides. Cut out both the corners of the first panel that would seat at the back, so that it sits flush fit with the back leg. Then, keeping an equal gap of half an inch, place the second slat and so on till you cover the whole frame. Nail them with some wire nails. When done, smoothen all the edges with a smoothing plane. Your basic chair is now ready. There's just one thing left to be done. Take a sandpaper and sand down all the rough edges to achieve a smooth and even surface. You can apply polish of your choice to give that rich look and texture.
Let's take a quick look at the procedure once again. Step 1. Marking and cutting the parts of the chair. Step 2. Marking and carving out the mortise grooves. Step 3. Marking and carving out the tenons. Step 4. Test fit and cut the tenons to size. Step 5. Dry fit the chair. Step 6. Assemble the back of the chair. Step 7. Fixing the side and front of the chair. Step 8. Fixing the slats for the seat. Step 9. Giving the finishing touch. A basic window is something you will find being used everywhere, that is homes, offices, factories, workshop, etc. In this session, you will learn to create a basic window. After completing this session, you will be able to estimate the material required for a basic window, construct a basic window. You must prepare the cutting list before you buy the material to construct a basic window. A cutting list must specify the length, width, and thickness of the wood. The list should also state the tools required to construct the workpiece. In order to make a basic window, you will require a steel ruler or measuring tape, a pencil, a marking gauge or cutting gauge, a tri-square, a handsaw, a jack plane, a smoothing plane, a mortise chisel, a firmer chisel, a wooden mallet, a T-bar clamp, a hammer, dowel pins or nails, a sandpaper, and some adhesive. Start by carefully examining the work drawing for dimension and design of the basic window. You can use any hardwood strip of dimensions 700 into 500 into 60 millimeters for constructing your basic window. Inspect the wood to make sure it's free from flaws like knots and other defects. Now that the preparations are done, it's time to get started on your workpiece. Use a handsaw and cut the wood to the requisite size. Use a jack plane to plane the face side and the face edge flat. Use a tri-square to check if the edges are cut square. If required, smoothen it further using a smoothing plane. Select the side free from blemishes and knots. Mark the face side and the face edge. All other measurements must be taken from either face side or face edge. For making the window frame, you'll need 4 pieces of wooden block according to the dimensions mentioned in the drawing. We will make this window using a corner bridle joint to join the 4 sides together, wherein the top and bottom pieces would work as the mortise members and the side frames will act as the tenon members. Measure and mark the points for the position of the joint for the mortise on the longer wooden piece on both the edges.
Extend the lines all around the wooden piece using a tri-square and a sharp pencil. This will set the depth of the mortise. Similarly, mark the depth for the mortise on the other piece and extend the lines all around. Now mark the tenon. Similarly, measure and mark the points for the tenon onto the smaller wooden pieces and extend the lines all around. This will set the length of the tenon. Set a mortise marking gauge to the width of your chisel. Centralize the gauge and scribe a line on both sides of both the components. This will determine the thickness of the mortise and the tenon members. Always work from the same face of the workpiece to minimize any inaccuracies. Secure the mortise member vertically to the bench vise on the workbench. Start cutting with a handsaw along the scribed mortise lines. Ensure that you don't overrun the shoulder lines. Swap the member on the vise to the other side and cut out the mortise from the other side. Now cut the matching tenon. Similarly, cut out the tenons from the tenon member in the same fashion.
Ensure you cut down on the waste side of the marked lines and take care not to cut beyond the cutting line. Then, secure the tenon member to the workbench with a G-clamp and cut down the remaining waste wood with a saw from both sides. When done, secure the mortise member to the workbench with a G-clamp and clear off the remaining waste wood from the slot with a sharp mortise chisel and square off the base. Clean up the tenon from both sides with a sharp bevel-edge chisel. Similarly, use the same process for carving out the bridle joints on all the four corners. Bring all the pieces together and fix it temporarily to make sure that all four joints are flush fit. Make any necessary adjustments with the chisel if required. Once you are satisfied with the joints, apply adhesives and join them together. Apply some glue evenly on the joining parts with a brush.
and fix them together one by one. Tap them lightly with a mallet to align properly. Hold it with a T-bar clamp to apply pressure. Ensure that all four corners are at 90 degrees angle with the help of a tri-square. Now drill some holes over the joints and insert dowel pins into them with a hammer. Chisel out the extra wood from the inserted dowel pins. Then cut out the extra wood remaining on the corners of the joints with a handsaw. Smoothen the surface of the frame with a smoothing plane. And mark the inner and outer sides for your reference. Your window frame is ready now. Now we need to fix the glass onto the window pane. To do this, we need some flat wooden strips and a glass piece cut to size. Take the measurement of the length from the inner edges and cut the strips to size.
Give the edges a miter cut to get a 90-degree angle joint on both the ends of all the strips. Ensure they align perfectly. If required, smoothen it further with a smoothing plane. Once all the strips are ready in place, fix them on the inner side of the frame. Apply some glue to the strip and fix them with some wire nails on the center line of the window frame on top, bottom and sides from the inner side. This will be the supporting edge for the glass to be placed on. Now turn the frame to the outside and place the glass over it. The strips fixed holds the glass in place from one side. Then place the other set of 4 strips from the outer side. And tap them lightly with a mallet to fit in. Hammer some wire nails to fix it tight. If required, use a smoothing plane to smoothen the edges of the strips. Do not apply glue to these strips, as you can remove them easily if required for any repairs. Your basic window is now ready. Let's quickly look at the procedures once again. Step 1.
Cut the wooden pieces to the requisite size. Step 2. Marking the layout for the bridle joint mortise. Step 3. Marking the layout for the bridle joint tenons. Step 4. Cutting out and carving the bridle joints. Step 5. Dry fit and check the trueness. Step 6. Apply glue and assemble the pieces together. Step 7. Fixing the glass to the window. बढ़ईगिरी ऐसे कार्यों से भरा है जिसके कारण सामग्री की चिह्नित करने की आवश्यकता होगी। निशान अक्सर वो जगह निर्दिष्ट करता है जहां सामग्री को काटा जाएगा। ये निशान संचालन के अनुक्रम के दौरान विशिष्ट मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इस सत्र में आप अलग अंकन उपकरणों के साथ काम करना सीखेंगे। इस सत्र को पूरा करने के बाद आप निम्न कार्य करने में सक्षम हो जाएंगे। विभिन्न अंकन उपकरणों का उपयोग करना। अंकन उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानियों का पालन करना। आइए देखें बढ़ईगिरी में प्रयोग किए जाने वाले अंकन उपकरणों के सभी विभिन्न प्रकार। पेंसिल, अंकन चाकू, स्टील की स्केल, अंकन गेज, कटिंग गेज, चॉक लाइन, बढ़ई पेंसिल फ्लैट और चौड़ी होती है। इसकी नोक मानक पेंसिल से कठिन होती है। इसका लकड़ी पर एक स्पष्ट लेकिन अस्थायी छाप छोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए समझें बढ़ई पेंसिल का उपयोग कैसे किया जाता है। लिखते समय आप जिस प्रकार एक मानक पेंसिल पकड़ते हैं उसी प्रकार बढ़ई पेंसिल पकड़े। लकड़ी को जहां काटना है एक स्टील की स्केल का प्रयोग करते हुए दोनों सिरों को माप के और चिह्नित करके उन्हें जोड़ते हुए एक रेखा खींचे। आप ट्राई स्क्वायर से भी रेखा खींच सकते हैं। पेंसिल पर अनुचित दबाव न डालें, इससे लेड टूट सकती है। पेंसिल को तेज करने के लिए हमेशा एक छेनी का उपयोग करें। एक अंकन चाकू स्टील से बना होता है। यह एक पंजीकरण रेखा बनाने के लिए रेखा खींचने वाले यंत्र का काम करता है। नोकीला सिरा रेखा खींचने वाले यंत्र और ब्लेड धार की तरह काम करता है और ये एक छेनी या आरे के लिए एक पंजीकरण रेखा बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अपने हाथ के मार्गदर्शन के लिए ब्लेड के शीर्ष पर एक उंगली रखकर चाकू कस के पेन की तरह पकड़े। जितनी अधिक विशिष्ट रेखा उतनी ही बेहतर। काटने के उपकरण अपनी निशान खोजकर छाप रखेंगे। यदि चाकू कुंद हो जाए तो उसे तेज करने के लिए पानी या तेल के पत्थर का प्रयोग करें। एक अंकन गेज आमतौर पर शीशम की लकड़ी से बना होता है। इसमें एक लकड़ी की बीम होती है जिस पर एक लकड़ी का तना सरकता है। यह ब्लॉक
आवश्यक माप पर एक अंगूठा पेंच के उपयोग से समायोजित किया जा सकता है। इस बीम के अंत में एक कांटा या स्टील की पिन होती है। माप लेने के लिए एक स्टील की स्केल का प्रयोग करें। पेंच ढीला करके अंकन गेज सेट करें और कांटे से आवश्यक दूरी पर तना खिसकाएं। तना निर्धारित करने के बाद उसे सुरक्षित करने के लिए अंगूठा पेंच कस ले। अंकन गेज इस प्रकार ढकेलिए कि कांटा हर समय लकड़ी छूकर एक सतत खरोंच बनाए। याद रखें, लकड़ी के टुकड़े पर एक समांतर रेखा बनाने के लिए उसकी बाजू समकोण पर होनी चाहिए। एक चूल गेज दो कांटों वाला अंकन गेज है। इसका ज्यादातर प्रयोग छेद या चूल जोड़ने के लिए लकड़ी अंकन के समय किया जाता है। माप लेने के लिए स्टील की स्केल का प्रयोग करें। तना निर्धारित करने के बाद उसे सुरक्षित करने के लिए अंगूठा पेंच कस ले। अंकन गेज की ही तरह कांटे को आगे ढकेलकर एक ही समय में दो समानांतर रेखाओं का अंकन करें। अंकन, चूल और कटिंग गेज तेज करने के लिए एक त्रिकोणीय नत्थी का उपयोग करें। कटिंग गेज एक अंकन गेज की तरह दिखता है और कार्य करता है। इसका ज्यादातर प्रयोग खरगोश और कबूतर पूंछ जोड़ों को बनाने के समय गहरे निशान करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा आप इसका इस्तेमाल 3 mm की मोटाई तक की प्लाई लकड़ी या लकड़ी के टुकड़े की पतली पट्टियां काटने के लिए भी कर सकते हैं। काटने का चाकू एक कील की सहायता से आयोजित किया जाता है। आप चाकू की लंबाई को इस कील को ढीला करके समायोजित कर सकते हैं। कटिंग गेज तेज करने के लिए एक त्रिकोणीय नत्थी का उपयोग करें। एक लंबा क्षेत्र या असमान सतह चिन्हित करने के लिए चॉक लाइन का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक मजबूत धागा होता है। माप लेने के लिए एक स्टील की स्केल का प्रयोग करें। आपको धागा बस थोड़ा गीला करके रंगीन चॉक पाउडर में डुबाना है। धागे को एक तरफ से पकड़े या बांधे और दूसरी ओर कसकर पकड़े। धागे को झट से खींचकर छोड़ने पर आपको चॉक का एक कश
और एक पल सीधी रेखा मिलती है। इन उपकरणों के साथ काम करते समय मन में इन बुनियादी सुझावों का ध्यान रखें। पेंसिल का उपयोग करते समय अधिक दबाव का प्रयोग न करें। हर समय पेंसिल तेज रखें। रेखा खींचने वाले यंत्र का प्रयोग लकड़ी में छेद बनाने के लिए न करें। अंकन चाकू की धार को सुधारने के लिए पानी या तेल के पत्थर का प्रयोग करें। अगर आपको लकड़ी के काम के चाकू से बनी छाप को देखने में परेशानी हो रही है, तो एक काले पेन या पेंसिल से छाप को भरें। सही माप लेना शायद बढ़ईगिरी में सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो पुरानी कहावत मापना 2 बार, कटौती 1 बार विशेष रूप से बढ़ईगिरी में सच है। इस सत्र में आप विभिन्न मापने के उपकरणों के साथ काम करना सीखेंगे। इस सत्र को पूरा करने के बाद विभिन्न मापने के उपकरणों को पहचानना, मापने के उपकरणों का उपयोग करना, मापने के उपकरणों का उपयोग करते समय सावधानियों का पालन करना। बढ़ईगिरी में मापने के उपकरणों के कई प्रकार हैं, जो आपको सतहों के बीच दूरी को मापने में मदद करेंगे। आइए उन पर एक नजर डालें। नापने का फीता, स्टील की स्केल, सिमटने वाली रूलर, लपेटने वाली रूलर, ट्राई स्क्वायर, माइटर स्क्वायर, फर्म जॉइंट कैलिपर, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। एक बढ़ई की बुनियादी मापने का उपकरण नापने का फीता है। आधुनिक नापने का फीते में एक धातु की पट्टी प्लास्टिक या धातु के बॉक्स में लपेटे हुए रहती है। टेप सतह पर नक्श की गई रेखाएं सेंटीमीटर और इंच में माप की वेतन वृद्धि का संकेत देती है। आप टैंग नामक धातु क्लिप टेप के अंत में जुड़ी हुई पाएंगे। एक नापने के फीते का उपयोग करने के लिए बस बक्से से बाहर टेप खींचे। टैंग को स्थिर वस्तु पर अटका दे, जैसे कि एक बोर्ड का किनारा। कटौती के स्थानों पर चिह्नित करने के लिए एक बड़ी पेंसिल का प्रयोग करें। टेप को खींचते ही वह अपने आप वापस लौटती है, जो टेप को अंदर लपेटा रखता है। स्टील की स्केल एक छोटा मापने का उपकरण है। यह 1 से 3 फुट के आकार में उपलब्ध है। यह एक कक्षा में उपयोग की जाने वाली आम लकड़ी या कांच की रूलर की तरह दिखती है। यह टेप की तरह होती है और इस पर माप रेखाएं नक्श होती है। स्टील के स्केल को वस्तु के विरुद्ध रखें। वंचित आयाम पर वस्तु चिह्नित करने के लिए एक पेंसिल का प्रयोग करें। सुनिश्चित करें कि रूलर की पहली अंकन रेखा आपके वस्तु के प्रमुख किनारे से मेल खाती है।
एक सिमटने वाली रूलर को टेढ़ी मेढ़ी रूलर भी कहा जाता है। इसके 10 टुकड़े होते हैं। प्रत्येक टुकड़ा एक खूंटी के माध्यम से दूसरे टुकड़े से शिथिलता से जुड़ा जाता है। प्रत्येक टुकड़ा 10 सेंटीमीटर लंबा होता है, जिसके कारण पूरी लंबाई 1 मीटर की हो जाती है। इसका ज्यादातर बड़ी लंबाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक लपेटने वाली रूलर के 4 तह होते हैं। प्रत्येक तह 6 इंच लंबी होती है। यह तह धातु या प्लास्टिक द्वार संधि से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जो 6 इंच तक लपेटी जा सकती है और 24 इंच तक फैलती है। रूलर को खोलकर एक वस्तु के विरुद्ध पकड़कर माप ले। ट्राई स्क्वायर एक एल आकार का परिशुद्धता उपकरण है। एक ट्राई स्क्वायर के सतह के चौकोरपन जांचने और काटने के पूर्व पेंसिल से रेखा अंकन के लिए एक गाइड के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। इसके 2 भाग होते हैं, एक स्टील की ब्लेड और एक कच्चे लोहे का तना। यह 2 भाग एक दूसरे के समकोण पर स्थापित होते हैं ताकि एल आकार बने। ट्राई स्क्वायर को तना से पकड़कर ऊपरी किनारे पर ब्लेड को रखें। जिस वस्तु को जांचना है उसके विरुद्ध इसे मजबूती से दबाएं। जांच करें अगर प्रकाश तना, ब्लेड और वस्तु के बीच दिखाई दे रहा है। अगर हां, तो वस्तु चौकोर नहीं है। माइटर स्क्वायर बिल्कुल ट्राई स्क्वायर की तरह काम करता है। इसका ज्यादातर जोड़ों को तैयार करने के लिए प्रयोग किया जाता है। दोनों के बीच फर्क सिर्फ इतना है कि माइटर स्क्वायर में ब्लेड और तना 45 डिग्री पर तय होता है और ट्राई स्क्वायर में 90 डिग्री पर। लकड़ी के टुकड़े के बाहरी कोने पर माइटर स्क्वायर को सरकाए। ब्लेड पूरे टुकड़े के संपर्क में होनी चाहिए। सतह के विरुद्ध मजबूती से माइटर स्क्वायर दबाकर सतह की समतलता की जांच करें। मापने के उपकरणों के साथ काम करते समय मन में इन बुनियादी सुझावों का ध्यान रखें। नापने का फीता उपयोग करते समय टेप की केवल आवश्यक लंबाई बाहर निकालें। पेंच कसने के लिए स्टील की स्केल का उपयोग न करें। मापने की रूलर खरोंच से मुक्त रखें। स्केल अपने उपकरण बॉक्स में एक अलग खांचे में रखें। आपके माप को अस्पष्ट करे ऐसी चौड़ी तिरछी रेखाएं टालें। सुनिश्चित करें कि हल्का सा भी अंतर आपके माप में शामिल नहीं है। माइटर स्क्वायर और ट्राई स्क्वायर पर हथौड़े का उपयोग न करें। सामान बांधते समय या साथी बढ़ई को सामान देते समय लापरवाही से माप उपकरण न फेंके। फर्म जॉइंट कैलिपर निकालते समय सावधान रहे ताकि उसके पैर न हिले। एक बढ़ई के रूप में आपको अलग अलग प्रकार की कटौती करनी होगी। हाथ आरी अलग अलग दांत के पैटर्न और ब्लेड की लंबाई के साथ आते हैं। इस सत्र में आप हाथ आरी के विभिन्न प्रकार के साथ काम करना सीखेंगे। इस सत्र को पूरा करने के बाद आप निम्न कार्य करने में सक्षम हो जाएंगे: विभिन्न हाथ आरी पहचानना, विभिन्न हाथ आरी का प्रयोग करना, हाथ आरी के उपयोग करते समय सावधानियों का पालन करना। हाथ आरी का सामग्री को चीरने और कटौती करने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका आमतौर पर लकड़ी के छोटे टुकड़ों में या लंबाई में काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। हाथ आरे में एक ब्लेड और एक दस्ता होता है। जो सिरा दस्ते के सबसे करीब होता है उसे एड़ी कहा जाता है।
दस्ते के सबसे अधिक दूर के सिरे को पैर की उंगली कहा जाता है। आरे के निचले किनारे को अगला हिस्सा कहा जाता है। आरे के ऊपरी किनारे को पिछला हिस्सा कहा जाता है। आरे के अगले हिस्से के साथ तेज फलाव को दांत कहा जाता है। आमतौर पर बढ़ाईगिरी में प्रयोग किए जाने वाले हाथ आरे के बुनियादी प्रकार है चीर आरा, क्रॉस कट आरा, पैनल आरा, चूल आरा, फ्रेट आरा, की होल आरा। एक चीर आरा लकड़ी के दाने के साथ कटौती करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह बड़े लकड़ी की टुकड़ों की कटौती के लिए प्रयोग किया जाता है। आइए विस्तार में देखें चीर आरे के कुछ हिस्से। चीर आरे में एक ब्लेड और एक दस्ता होता है। चीर आरे के दांत के कोण सीधी खड़ी रेखा के सामने 60 डिग्री में 8 डिग्री कम और पीछे 52 डिग्री है। लकड़ी को काटने से पहले मापकर अंकन करें। बड़ई पेंसिल और एक स्टील की स्केल का उपयोग करके एक मार्गदर्शक रेखा बनाएं। लकड़ी काटने का कार्य शुरू होने से पहले एक काम बेंच पर लकड़ी के दोनों पक्षों का समर्थन करें। आरे के दस्ते को एक हाथ से पकड़कर दूसरे हाथ से सहारा दे। बड़ई पेंसिल से बनाए गए निशान पर अपने आरे की ब्लेड के बिंदु को रखें। आरे को थोड़ा नीचे की ओर कर कटौती के दौरान दबाव बनाए रखकर आगे ढकेलिए। आरे को समान रूप से पीछे खींचें। कटौती के दौरान थोड़ा नीचे की ओर दबाव रखकर आरे की ब्लेड को आगे ढकेलकर पीछे खींचना जारी रखें। एक अच्छी और साफ कटौती करने के लिए एक स्थिर और आसान लय के साथ आरे से काटें। आइए फिर से चीर आरे के कुछ हिस्सों पर एक नजर डालें। एक क्रॉस कट आरे का लकड़ी को दानों से तिरछा काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसकी दांतों की पैटर्न चीर आरे से अलग होती है। क्रॉस कट आरे के दांत के कोण सीधी खड़ी रेखा के सामने 15 डिग्री और पीछे 45 डिग्री होती है। एक क्रॉस कट आरे का प्रयोग बिल्कुल चीर आरे जैसे होती है। एक चीर आरे की ही तरह क्रॉस कट आरे को आगे ढकेलकर पीछे खींचें। अगर लकड़ी के टुकड़े पर अस्त व्यस्त दाने दिखे तो क्रॉस कट आरे का प्रयोग न करें। पैनल आरा सबसे अधिक प्रयोग किया गया देखा है। यह चीर आरे का एक छोटा संस्करण है। यह बोर्ड और प्लाई लकड़ी काटने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका पैनल या दरवाजे के शटर काटने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। पैनल आरे का प्रयोग बिल्कुल चीर आरे जैसा करें। चूल आरा आकार में अधिक आयताकार होता है और उसके अपेक्षाकृत पतले दांत होते हैं, जिसका छेद
और चूल बढ़ई के काम में चूल कटौती करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस आरी का सटीक नियंत्रण के साथ चीर कटौती और दाने के आड़ा पार कटौती के लिए उपयोग किया जाता है। इसका प्रयोग बारीक काम में होता है जहां सटीकता की आवश्यकता होती है। कटौती के समय ब्लेड को आर पार जाने से रोकने के लिए इसमें एक मजबूत पट्टी होती है। किसी भी दूसरे हाथ आरे जैसा इसका प्रयोग करें। एक फ्रेट आरे का पतली लकड़ी काटने और पेचदार वक्र काम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यह अन्य आरी से अलग दिखता है। एक फ्रेट आरे में एक बहुत पतली ब्लेड लकड़ी या धातु के फ्रेम में तनाव में आयोजित होती है। इस ब्लेड को कसने या ढीला करने के लिए एक छोटा सा नट होता है। लकड़ी के टुकड़े में छेद काटने के लिए बस एक छोटा सा छेद ड्रिल करें। ड्रिल किए गए छेद के एक सिरे से ब्लेड पास करें। पेंच कस के ब्लेड की जगह में बिठा दे। ऐसा करते समय बहुत सावधानी रखें। एक हाथ से सीधा दस्ता पकड़कर चिन्हों के अनुसार ध्यान से काटें। आइए दोबारा देखें फ्रेट आरे के कुछ हिस्से। एक ताली लगाने के छेद आरे में एक पतली संकीर्ण ब्लेड होती है। इसका पेचीदा घटता कटौती या लकड़ी में छेद करने के लिए ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। नोकीला संकीर्ण ब्लेड लकड़ी के पैनल के केंद्र से काटना शुरू करने के लिए अनुमति देता है। ड्रिल किए गए छेद को बड़ा करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। यह विशेष रूप से एक चूल ताला के लिए ताली लगाने के छेद की कटौती करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक ताली लगाने का छेद बनाने के लिए पहले ताली लगाने के छेद की कटौती किए जाने की जगह चिह्नित करें। फिर एक ड्रिल मशीन द्वारा आरे से कटौती करने के लिए निशान बनाएं। ताली लगाने के छेद आरे का दस्ता पकड़कर किए गए छेद में आरे के नोकीले किनारों को प्रस्थान करें। चाबी की मोटाई और आकार के हिसाब से लकड़ी काटे। हाथ आरे का उपयोग करते समय मन में इन बुनियादी सुझावों का ध्यान रखें। सुनिश्चित करें कि अपने आरे का दांत तेज है। सुनिश्चित करें कि आरे का दस्ता मजबूती से निर्धारित है। काटने का कार्य करते हुए अधिक जोर से नीचे न दबाएं। जब भी संभव हो लकड़ी में उपस्थित गांठ को काटने से बचें। हाथ आरे का प्रयोग करते समय हमेशा सावधानी बरतें और सुरक्षा उपकरण पहनें। हाथ आरी अन्य उपकरणों के साथ उपकरण बॉक्स में न डालें। उन्हें स्टोर करने के लिए एक अलग बॉक्स का उपयोग करें। जब उपयोग में ना हो आरे को एक कपड़े में लपेटें। खंडपीठ रंदा काम घोड़े है जो बड़ेगिरी कार्यशालाओं में धीरे धीरे लकड़ी कम करते हुए लकड़ी की सतह चिकनी करके परिष्करण आयाम प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। खंडपीठ रंदा का उचित उपयोग करने के लिए अभ्यास की बहुत जरूरत है। इस सत्र में आप खंडपीठ रंदा के विभिन्न प्रकारों के साथ काम करना सीखेंगे। इस सूत्र के पूरा करने के बाद आप निम्न कार्यों में सक्षम हो जाएंगे: विभिन्न खंडपीठ रंदों और अनेक हिस्सों की पहचान और उपयोग करना, सभी रंदों की सेटिंग, पकड़ और चलाने की तकनीक का उपयोग करना, सतह चिकनी करने का प्रदर्शन, किनारा बनाने का प्रदर्शन, खंडपीठ रंदों को इकट्ठा और खंड करना। Today I will be discussing on Civil Services Conduct Rules 1964. It is a very important and relevant topic. Every central government employee should be aware with these rules. The central civil services are concerned directly with the union